Hello guys, I'm Abbas Wani. Today we will discuss listening skill. As you know, English language has four skills. The sequence of those skills are listening, speaking, reading, and writing. First, first, first of all, we will discuss listening skill. After completing all the things related to listening, for example, definition of listening, types of listening, active passive, barriers to the listening, then we will go through the second skill, speaking. So listening is the first step of language skill. You should know it. And this is the audio sense. This is the audio sense. Listening means paying attention not only to the story but how it is told, the use of language and voice, and how the other person uses his or her body. In other words, it means being aware of both verbal and non-verbal messages. So, in short, we can say listening means paying 100% attention towards the content, what the speaker is saying, and how he narrates the story. It means you have to pay 100% attention towards the content, towards the words, how he uses language and voice, how he pronounces the words. It means you cannot avoid a bit from a lecture, and how the other person uses his her body. So you have to check his body language while speaking. For example, teacher is delivering a lecture in a class. You have to pay 100% attention towards teacher, and you have to check his her movements. तो हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं it means being aware of both verbal and non-verbal messages. So obviously speaker uh, can speaker can narrate verbal and non-verbal messages. He is speaking, so obviously verbally he is talking to us. He is narrating a story, he is suggesting something, he is giving advice, etc. So at the same time he is nodding his head, he is raising his finger, he is using whiteboard, he is using marker, etc. तो ये जेस्चर्स वगैरह जो है ये नॉन वर्बल मैसेज में आते हैं. So now the second step will do the types of listening. As you know, there are two types of listening. One is active listening, second is passive listening. First of all, we'll go through active listening. Active listening in today's world of the high tech and high stress. You know, we are living in 4G world. टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी उभर कर सामने आती है. वी हैव सेल फोन्स, so you can visit the whole world at your own room. In your own room you can visit the whole world by visiting Google Maps. So at the same time we are tense, we are stressed. Communication is more important than ever. However, we spend less and less time really listening to each other, so we don't have that proper time. You're avoiding classes, you're avoiding family members, you're avoiding your friends. You don't want to listen to each other. Genuine attentive listening has become rare. Now it is rare, genuinely it is rare. Now nowhere you will find listeners.
मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ जो जिससे आप आसानी से समझेंगे। देखिए, मैं कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ, ऑडियो चीज़ें शेयर करता हूँ ग्रुप में किसी टॉपिक के रिलेटेड। आप कहते हैं चलो आई लीव इट, आई लिसन इट नेक्स्ट टाइम, और छोड़ देते हो, इग्नोर करते हो, आई हैव सोर्सेज, आई कैन यूज़ यूट्यूब वगैरह। तो इस वजह से नाउ इट इज़ रियर, ये रियर है। Active listening skills can help build relationships. So this is the benefit of active listening. It can build a relationship, solve problems. You can solve your problems, ensure understanding and avoid conflict. जब आप properly किसी चीज़ को समझेंगे तो आपके conflict दूर हो जाएंगे. By becoming a better listener, you will improve your workplace productively. Obviously, if you will become a better listener, you can improve your work, you can improve your work. आप अच्छे से स्टडी कर पाओगे जब आप अच्छे से समझोगे, as well as your ability to lead a team, persuade and negotiate. Obviously जब आप में ये सारी चीज़ें होंगी, listening skill, जब आप properly listen करोगे किसी चीज़ को, स्पीकर को, तो आप में ये सारी एबिलिटी वगैरह जो है आएगी। तो आप एक टीम को भी आप हैंडल कर सकोगे प्रॉपरली, उनको प्रॉपरली गाइड कर सकते हो। सॉरी, आई हैव अ कोल्ड, यू नो, इट इज़ विंटर सीजन हियर इन कश्मीर। तो हमें यहाँ पे 4 फीट बर्फ़ पड़ी है, तो मुझे कोल्ड हुआ है। Sorry, it can't create an issue. Now we'll do the definition of listening. Active listening definition. Active listening requires the listener to fully concentrate. You should pay 100%, as I just said in the beginning. You should pay 100% attention towards listener, and you should understand, you should decode his words, his language. You should decode, you should respond, and then remember what is being said. तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। पहले आपको कंसंट्रेट करना है व्हाट ही इज सेइंग, फिर आपको समझना है, यू हैव टू डिकोड द थिंग्स, देन यू हैव टू एनकोड। एनकोड मीन्स यू हैव टू रेस्पॉन्ड। यहाँ पे आपको रेस्पॉन्ड करना व्हाट इज बीइंग सेड, कि स्पीकर बोल क्या रहा। You make a conscious effort to hear and understand the complete message being spoken. मतलब आपको कॉन्शियस रहना है, कॉन्शियस एफर्ट्स दिखाने हैं कि स्पीकर बोल क्या रहा है, कंप्लीटली उसे सुनना है, उसकी मैसेज को डिकोड करना है, rather than just passively hearing the message of the speaker. मतलब अगर आप एक्टिव लिसनिंग में हो तो प्रॉपरली आपको अटेंशन 100% अटेंशन पे करना है टुवर्ड्स स्पीकर। लेकिन जब आप वहाँ यहाँ भटक जाते हो तो ऑब्वियसली आप वो मैसेज जो है वो डिकोड नहीं कर पाओगे कि स्पीकर कह रहा है। After this we'll do these important points. Why is listening important? Benefits of active listening. What makes a good listener? Verbal and non-verbal signs of active listening. 4 different listening styles. Examples of active listening. Barriers of effective listening. Tips to become an effective listener. Listening exercise. तो ये सारी चीज़ें मैंने तैयार की है इस नोट में। तो ये PDF मैं भी आपको सेंड कर दूंगा, और इसका ऑडियो वगैरह जो है, ऑडियो वर्जन भी मैं सेंड कर दूंगा। तो पहले हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे, व्हाई लिसनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। लिसनिंग इज़ द मोस्ट फंडामेंटल component of communication skill. As I already said, that English language has 4 skills, that is listening, speaking, reading and writing. So this is the fundamental tool, this is the fundamental component of communication skill. Without listening you cannot utter a word, you cannot speak a word. Listening is not something that just happens. तो लिसनिंग वो चीज़ नहीं है कि आपने कुछ सुना एंड दैट्स लिसनिंग। नो,
Listening is an active process. It is an active process. ये वो अमल है in which a conscious decision is made to listen to and understand the message of the speaker. ये आपका conscious decision होता है that I have to listen, I will listen properly because I have to clear the examination. I will pay 100% attention towards teacher while delivering a lecture because I have to clear the examination. I have to pass the examination with good marks. So it is your conscious effort. Conscious effort. That's why you are listening to speaker. Active listening is all about also about passions. You have to show passions while doing active listening. Listeners should not interrupt with the questions or comments. So while delivering a lecture, you should not interrupt your teacher. You should ask questions. You must be having some queries, but you can ask questions after the completion of the lecture. There may be the question answer session after the lecture. Active listening involves giving the other person time to explore their thoughts and feelings. They should be given adequate time for that. एक्टिव लिसनिंग में क्या चीज़ होती है, यहाँ पे टीचर विल गिव यू टाइम, टीचर और स्पीकर विल गिव यू टाइम दैट हाउ यू विल डिकोड द थॉट्स एंड द फीलिंग्स. तो फिर आपको एक मुकर्रर टाइम दिया जाता है जिसमें आपको फीडबैक के लिए बोला जाता है. फीडबैक मीन्स आप पेपर पे लिखते हो या क्वेश्चंस पूछते हो, सर यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम रही, तो इसमें आपको प्रॉपरली टाइम दिया जाता है. तो इसलिए लिसनिंग जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. अब बेनिफिट्स ऑफ लिसनिंग, दिस इज द सेकंड पॉइंट. तो इसके क्या फ़ायदे हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एक्टिव लिसनिंग. देयर आर मनी इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग. दीज इंक्लूड, द फर्स्ट थिंग इज it builds deep trust. You as you cultivate the habit of the listening sincerely, जब आप सिंसियरली आप में अपने आप में ये चीज़ लाओगे कि मुझे लेक्चर को सुनना है प्रॉपरली, जब आप पूरी तरह से सिंसियर रहेंगे, यू इनवाइट पीपल टू ओपन अप. तो आप लोगों को किस तरह से इनवाइट करोगे, दैट हाउ शुड यू लिसन, किस तरह से आप काम करोगे. They can sense that you will not be jumping to conclusions based on the superficial details. They also realize that you are enough about them to listen attentively. While building trust takes them, it leads to great benefits such as lifelong friendships and a promise of help in the difficult time. So the first benefit of active listening is you can build a trust. यहाँ पे आप एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि लिसनिंग में बहुत सारे लोग जो हैं इन्वॉल्व होते हैं. तो जैसे कहते हैं माय फ्रेंड इज़ नॉट ए गुड लिसनर, मतलब आपने उसे देखा होता है, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो. आप कहते हो ही इज़ नॉट ए गुड लिसनर. तो ये आप क्यों कहते हो, क्योंकि आपको पता है वो प्रॉपरली चीज़ों को नहीं सुनता है, वो ऐसे ही पता नहीं कहाँ होता है, उसका दिमाग कहाँ होता है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे पहले आपको ट्रस्ट जीतना है कि किस तरह से लोग जो है कंसंट्रेट कर पाते हैं कि मैं पूरी तरह से इंटरेस्टेड हूँ क्लास में. जैसे क्लास में किसी को डांट पड़ती है, ठीक है, क्लास में किसी को डांट पड़ती है क्योंकि वो लिसनिंग प्रॉपरली नहीं करता है. उस वजह से जब टीचर उसे उठाता है, कुछ पूछता है, तो उसे पता ही नहीं होता, वो खोया होता है. तो नेक्स्ट टाइम टीचर क्लास में आके उसे फिर से वार्न करता है कि आप प्रॉपरली नहीं सुन पा रहे हो, प्लीज़ बी अटेंटिव टुवर्ड्स द लेक्चर, टुवर्ड्स द क्लास. हाँ, क्लास में पूरी तरह से अटेंटिव रहो. तो इस तरह से एक चीज़ ये होती है. देन ब्रॉडनेस योर पर्सपेक्टिव. तो ये और एक पॉइंट है. सेकंड बेनिफिट इज़ कि इससे आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका विजन जो है वो बढ़ जाता है. योर ओन पर्सपेक्टिव इन लाइफ इज़ नॉट द कंप्लीट ट्रूथ और हाउ एवरीवन एल्स सी. तो किस तरह से आपका पर्सपेक्टिव जो है, लाइफ को आप किस तरह से देखते हो, क्या करते हो, कंप्लीट ट्रूथ एवरीवन एल्स सी इट. सारे लोग देखते हैं दैट his perspective is not good, he cannot interpret it in a proper way because he is not a good listener. तो
The way you understand life from your beliefs and thinking is only one way to look at it. देखिए, आप किस तरह से लाइफ को देखते हो, आपका क्या पर्सपेक्टिव है लाइफ का, वो अलग चीज़ है। लेकिन दूसरे बंदे आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो किस तरह से आपका व्यू पॉइंट उनसे मिलता है, आपका विजन उनसे मिलता है या नहीं मिलता है, तो इसलिए इससे आपका पर्सपेक्टिव जो है वो वाइडन हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है। क्योंकि आप शायद अपने तरीके से सोच रहे थे, लेकिन जब आप यहाँ पे आए, जब आप प्रॉपरली लिसनिंग कर रहे हो, तो इसकी वजह से आपका सोच जो है थोड़ा वाइड हुआ। नहीं, मैं गलत था, मुझे इस तरह से सोचना चाहिए। तो हम लाइफ को डिफरेंटली देखते थे। लिसनिंग टू अदर पीपल पर्सपेक्टिव्स अलाउज यू टू लुक एट द लाइफ फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव, सम ऑफ विच यू मे नॉट हैव थॉट ऑफ बिफोर। जो आपने पहले नहीं सोचा होता है, आप आपके पास वो चीज़ें, शायद उन चीज़ों का इल्म नहीं होता है, आपको कम नॉलेज होता है उन चीज़ों का। तो जब आप प्रॉपर लिसनिंग करते हो, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चल जाती है कि किस तरह से मुझे अटेंशन पे करना है, किस तरह से मुझे इस चीज़ को